Okay, now we move on to IELTS listening part 2, and if you face MCQs or if you see MCQs in part 2, don't be afraid. Don't say, oh no, what will I do now? Huh? You just have to face MCQs in IELTS, so MCQs are there. Sometimes one of my students, he took his exam, he had 30 MCQs. Part 1 MCQs, part 2 MCQs, part 3 MCQs, part 4 one word only. So yeah, you should be, what do you say, you should have enough courage to deal with every type of questions. Okay, visit to Ren Lake Castle. Now just switch on your imagination. If you've been to any castle, like in Lahore, we've got Lahore Fort, right? Fort and castle, almost the same thing. So you can just visualize castle, a place where king used to live. So question number 11. Before Queen Elizabeth I visited the castle in 1576. Now what happened before the visit of Queen Elizabeth I? Right? A. Repairs were carried out and all that. Repairs carried out guest rooms. Option B. New building was constructed. Option C. Fire damaged. So it's repairs, it's new building for her, and it's fire damaged part of the main hall. Okay, now listen, they will talk about all three options in any order. The first thing is you need to catch that order which they are discussing. For example, if they talk about option C, you should be on option C. If they move to option A afterwards, you should be there. After listening to each option, you must decide whether this option is the right answer or the trap. For example, now what is the question? The question is, before Queen Elizabeth I visited the castle, and they say, well, repairs were carried out right after her visit. So it's a trap, because the question is before the visit, and say soon after she visited the castle, the fire damaged part of the main hall. Trap, because the question is before she visited, right? So you need to focus this very thing. All right, now let's go on. Question number 12. In 1982, the castle was sold to. Now in multiple choice, never read article. Number A, government. B, Fanny's family. C, entertainment company. And how will the trap come? First, they decided to sell it to the government, but government was not interested. Understand? Right? Didn't say. Then Fanny's family offered a very fair price to buy this castle, but the deal could not be finalized. बात समझ रहे हैं ना? मतलब करना क्या है? Sold to, जिसको फाइनली बेच दिया वो आंसर. जो नहीं होता कि मेरी शादी पहले उससे होनी थी, लेकिन फिर बात नहीं बनी, फिर उससे होनी थी, आखिरकार फिर इससे हो गई. ओके, जिससे होती है ना उससे खुश नहीं होते, जिससे नहीं होती उसका इंतजार होता है, और जिससे नहीं होती अगर उससे भी हो जाए ना तो उस बेचारी का भी ऐसे ही हाल होगा. ऑलराइट, एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ, ज़ाती तजर्बा नहीं है, ठीक है. ये किसकी? देखिए सेक्शन 2 में मैं बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस है. अभी मैं ऑडियो चलाऊंगा, ऑडियो में से आपने देखना है ए बी सी में से कौन सा ठीक आंसर है. अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या है. समझ आएगी जब ऑडियो चलेगी तो, ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं. इन सम ऑफ द रूम्स विजिटर्स कैन. अब वेरी सिंपल, कुछ रूम्स में विजिटर्स कुछ कर सकते हैं, जो वो नहीं कर सकते दैट विल बी द ट्रैप, जो वो कर सकते हैं दैट विल बी द आंसर. ए क्या है? स्पीक टू एक्सपर्ट्स. बी क्या है? इंटरेक्ट विद एक्टर्स. सी क्या है? सी मॉडल्स. और एक चीज नोटिस करें, तीनों ऑप्शंस स्टार्ट हो रहे हैं वर्ब से. तीनों ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं वर्ब से, तो आपने फोकस करना है वर्ब पे, राइट? यानी कुछ रूम्स में विजिटर्स क्या कर सकते हैं? स्पीक टू एक्सपर्ट्स, इंटरेक्ट विद एक्टर्स. अब वो ये बोलेंगे, वेल इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मिक्स अप विद द एक्टर्स व्हेन दे आर ड्रेस्ड अप बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू डू सो. इसका मतलब है बी आंसर नहीं है. मल्टीपल चॉइस में देखना ही ये है कि कौन सा आंसर नहीं है.
जो नहीं है उसको निकाल दें, तो जो बच जाएगा वो आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। इन द कासल पार्क विजिटर्स कैन, अब कासल पार्क क्या है? एक पार्क है उस पूरे रेन लेक कासल में। इन कासल पार्क विजिटर्स कैन क्या कर सकते हैं? सी एन 800-year-old ट्री। अब अगर वो ये बोलें लास्ट ईयर देयर यूज्ड टू बी अ ट्री विच वाज 800 years old बट इट वाज ट्रेजिकली डिस्ट्रॉयड, तो क्या अब आप वो दरख्त देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यही सुनना है ना, मतलब 3 ऑप्शन है, सबसे पहले कैच करना है किस ऑप्शन की बात हो रही है, उसके बाद कैच करना है ये ऑप्शन आंसर है या नहीं है। बी क्या है? गो टू एन आर्ट एग्जीबिशन। सी क्या है? विजिट अ स्मॉल जू। अब अगर वो ये बोले वी हैव अ स्मॉल जू हियर विच इज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, अब क्वेश्चन क्या है? विजिटर्स कैन, सो विजिटर्स कैन सी द जू? नो, दे कैन नॉट सी द जू। ये करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 15, एट द एंड ऑफ द विजिट द ग्रुप विल हैव, एंड पे क्या होता है? या तो चाय पिलाते हैं, या तस्वीरें उतारते हैं, या कहते हैं निकलो इधर से। ओके, सो ए आफ्टरनून टी इन द कंजर्वेटरी, कि कंजर्वेटरी जो रूम एक है वहां पे आपको चाय पिलाएंगे। बी क्या है? चांस टू मीट कासल्स ऑनर, कि कासल का जो ऑनर है आप उसको मिल सकते हैं। और सी क्या है? फोटोग्राफ टुगेदर ऑन द ग्रेट स्टेयरकेस, के जो सीढ़ियां नहीं, जैसे रॉयल पाम की सीढ़ियां नीचे, वहां पे आपकी फोटोग्राफ होगी। तो क्या लगता है, चाय पिलाएंगे या फोटोग्राफ होगी? फोटोग्राफ होगी, चाय नहीं पीनी। ओके, चलें जी, अब ये 15 क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं ऑडियो चलाऊंगा और आपने देखना है कि क्या आंसर है, गौर से समझना है इसको। Just get up. Section 2. You will hear a guide talking to a group of tourists who are about to visit an English castle. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. We'll be arriving at Ren Lake Castle in about 5 minutes. But before we get there, I'll give you a little information about the castle and what our visit will include. So, in fact, there's been a castle on this site for over 1100 years. The first building was a fort constructed in 914 AD for defence against Danish invaders by King Alfred the Great's daughter, who ruled England at the time. In the following century, after the Normans conquered England, the land was given to a nobleman called Richard de Vere, and he built a castle there that stayed in the de Vere family for over 400 years. However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576, it was beginning to look a bit run down, and it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her out of wood next to the main hall. She stayed there for 4 nights, and apparently it was very luxurious, but unfortunately it was destroyed a few years later by fire. In the 17th century, the castle belonged to the wealthy Fennis family, who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982, the Fennis family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support, and they put it on the market. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. But when we get there, I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle. When you go inside, you'll find that in the staterooms, there are lifelike moving wax models dressed in costumes of different periods in the past, which even carry on conversations together. As well as that, in every room, there are booklets giving information about what the room was used for and the history of the objects and furniture it contains.
The castle park's quite extensive. At one time, sheep were kept there, and in the 19th century the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. Nowadays, the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture. The park also has some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987. Now, you're free to wander around on your own until 4:30, but then, at the end of our visit, we'll all meet together at the bottom of the great staircase. We'll then go on to the long gallery, where there's a wonderful collection of photographs showing the family who owned the castle 100 years ago having tea and cakes in the conservatory. And we'll then take you to the same place where afternoon tea will be served to you. Where afternoon tea will be served. So question number 11. It's B. A new building was constructed made of wood, and then they said it was tragically destroyed by fire. Right? So B is for question number 11. Question number 12. C. Entertainment company. For entertainment they used amusement parks. Right? Question number 13. In some of the rooms visitors can see models of historical figures moving and talking. They said wax models and they are moving and talking. Question number 14. C. Visit a small zoo, but they said zoo was turned into an art room and now there is exhibition and all that. So it's B. B for boy. Question number 15. At the end of the visit, the group will have afternoon tea in the conservatory. He first said we'll go to the great staircase and this and that, and then finally in the end he said afternoon tea in the conservatory. Okay, very good. Now please come to next page. Page number 35, we've got Ren Lake Castle and there is a map. Now all of you don't need to read the questions, you need to take a look at the map first. On the top right corner you can see we have the directions north, south, west, east. So it's a good idea कि जो चारों कोने हैं ना वहाँ पे लिख लें, जहाँ पे वेस्ट है वहाँ पे वेस्ट लिख लें, टॉप पे लिख लें नॉर्थ, राइट पे लिख लें ईस्ट और बॉटम पे लिख लें साउथ, क्योंकि वो आपको बोलेंगे साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ लाइक दैट और साउथ ईस्ट लाइक दैट. ठीक है, ताकि पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे है. अच्छा, मेन एंट्रेंस देख लें, मेन एंट्रेंस से स्टार्ट होगा. अब मैप ना दो तरह के आते हैं, एक होता है कि हर दफ़ा मेन एंट्रेंस से आपको उस पॉइंट पे लेके जाएंगे, फिर दोबारा अगले पॉइंट पे जाना है तो फिर बोलेंगे मेन एंट्रेंस से यहाँ पे जाओ तो ये जगह आ जाएगी, फिर अगर कैफ़े जाना है तो फिर बोलेंगे मेन एंट्रेंस से यहाँ पे जाओ तो जगह आ जाएगी. एक तो ये होता है. एक होता है पूरा ही चक्कर दिला देते हैं. पूरा चक्कर है कि मेन एंट्रेंस से जाएंगे आगे, फिर ये आ जाएगा, फिर इससे आगे ये आ जाएगा, इससे आगे ये आ जाएगा. तो क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि ऑडियो में उसने वन बाय वन इन चीज़ों का नाम लेना है. आपने देखना है कि दिया क्या क्या हुआ है. अब ज़रा देखिएगा, मेन एंट्रेंस से जब आप अंदर जाते हैं तो साउथ गेट है. साउथ गेट के साथ 3 पॉइंट्स हैं. अगर साउथ गेट से आप ईस्ट पे जाएं तो सी है, साउथ गेट के साथ एच है, साउथ गेट से वेस्ट पे जाएं तो आपका ई है, ई फॉर एलिफेंट. राइट. उसके बाद देखें, साउथ गेट के बाद ग्रेट हॉल है, नॉर्थ गेट है, टावर वॉल्स है, टावर एयर वॉल्स है. उसके बाद आप देखें रिवर है. अगर रिवर से आपको ब्रिज क्रॉस करवाए तो ए होगा. ठीक है. और अगर मेन एंट्रेंस से कि एंटर होते ही लेफ्ट पे हो जाएं, राइट, तो लेफ्ट पे होते साथ ही अगर तो ब्रिज क्रॉस करवाए तो जी होगा, अगर बोले सीधा चले जाएं तो डी होगा. मतलब आपने क्या करना है, पेंसिल जो है ना आपके हाथ में, जो पेंसिल है वो पेंसिल ऑडियो के इशारे पे मूव होगी. आपने सबसे पहले पेंसिल रख दी मेन एंट्रेंस पे और ये वाला हाथ आपने रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स.
अब ग्रेट हॉल है और वो है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, अब वो आपको ऑडियो में बताएगा. दिस इज द मेन एंट्रेंस. व्हेन यू एंटर फ्रॉम हियर, इफ यू गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द साउथ गेट, very close to south gate, you will find the starting point for walking the walls. क्या हो जाएगा? H. ठीक है. अब यही और ये वाला हाथ आपका मुसलसल क्वेश्चंस पे रहेगा. उसके बाद क्योंकि अगर आपने मैप को छोड़ दिया क्वेश्चंस पे आ गए तब भी गड़बड़ है, वापस उस पॉइंट पे जाना मुश्किल होगा. और एक काम और कर लें, अगर फर्ज करें H आंसर है 16 का, तो बजाय वापस आके 16 के आगे H लिखने के, H के साथ 16 लिखते हैं ताकि मैप से आप हटे ना. अगर वापस आएंगे फिर, लेकिन ये होगा सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 चलेगा. अच्छा, नेक्स्ट है 17 बो एंड एरो डिस्प्ले. अब दोबारा ये जो वर्ड्स दिए मैंने, ग्रेट हॉल, साउथ गेट, नॉर्थ गेट, टावर, वॉल्स, ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे. इन्हीं के दाएं बाएं ये होगा आंसर. ठीक है. प्रेपोजिशंस का बड़ा रोल है. प्रेपोजिशंस जैसे इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, ऑपोजिट, क्लोजर, एक प्रेपोजिशंस का रोल है. और एक आपके जो वर्ड्स होते हैं ना डायरेक्शन के, गो स्ट्रेट, टर्न राइट, इन द कॉर्नर, बिहाइंड एंड ऑल दैट. इसके लिए मैंने एक हैंड आउट शेयर किया, मैं दोबारा फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे आपको इसकी हेल्प मिलेगी. ठीक है. नाउ आई प्ले दी ऑडियो और ये आपने इसको करना है. ठीक है. पेंसिल जो है ना साथ साथ मूव करे ऑडियो के, और ध्यान रखना है प्रेपोजिशंस का लेफ्ट हैंड रखना है क्वेश्चंस पे, ताकि क्वेश्चंस भी पता हो कि अभी 16 है, अभी 17 है. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m, there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. Right, so we're just arriving. It was very quick and fluent audio. Okay, question number 16. H. Main entrance, go straight near the south gate. That's the starting point. H will be the answer. Question number 17. Bow and arrow display. That's D, because he said from main entrance turn left. किसी ने G भी लिखा होगा. उसने बोला था past the bridge. एक होता है cross the bridge, एक होता है go past the bridge. Go past the bridge है ब्रिज के पास से गुजर जाएं. ठीक है. उसने क्रॉस का वर्ड यूज नहीं किया,
उसने बोला गो पास्ट द ब्रिज, तो गो पास्ट द ब्रिज तो फिर सिर्फ डी बचता है, ठीक है। गो पास्ट का वर्ड जो है ना ये याद रखें, वो नहीं कहते एक्सक्यूज मी कैन आई गेट पास्ट, कि दरवाजे में कोई खड़ा हुआ है, रास्ता उसने मला हुआ है, तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी कैन आई गेट पास्ट, कि क्या मैं यहां से गुजर सकता हूं। तो पास्ट द ब्रिज, के ब्रिज के पास से, अगर वो बोलता क्रॉस द ब्रिज तो फिर उसको क्रॉस करके। क्वेश्चन नंबर 18, हंटिंग बर्ड्स। ये मेन एंट्रेंस से आपको लेके गया, उसके बाद राइट टर्न करवाया और फिर बोला कि ऑन योर राइट, ऑन योर राइट इट्स एफ। अच्छा जी, 19 है ट्रेडिशनल डांसिंग, बोला था 10 मिनट वॉक है ब्रिज क्रॉस करके और दूसरी तरफ एंड ऑल दैट, दैट इज ए। और एंड पे उसने बोला शॉप का, उसने बोला अंदर से रास्ता नहीं है, मेन एंट्रेंस से लेफ्ट होना है और फर्स्ट राइट, लेफ्ट होके अब ये जो ना टर्न लेफ्ट टर्न राइट फर्स्ट राइट सेकंड राइट ये आना चाहिए, इसको कहते हैं डायरेक्शन की लैंग्वेज, और प्रेपोजिशंस आनी चाहिए। ये दो चीजें आए, मैप से आसान कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर ये दो चीजें नहीं आती, अब उसने बोला गेट पास द ब्रिज, आप ब्रिज के ऊपर से गुजर के, ठीक है। तो मैप्स देने का मकसद ही ये है कि आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके रास्ता ना भूल जाएं, कि कोई आपको रास्ता बताए, आप कहें नो इंग्लिश, नो 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 अंडरस्टैंड, टेक मी देयर, ओके, फिर आपको घर छोड़ के आए। एक ऐसा बंदा उस सोसाइटी के लिए बड़ा डेंजरस है। मतलब आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रह रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, यू आर अ डेंजर टू सोसाइटी। इसीलिए वो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना सीख के आए यहाँ पे अगर आना है तो। ओके, थैंक यू।